Assalamu alaikum. This is Amin Qureshi, and with me I have Dr. Atar Mansoor today. And this is the first of a series of videos that we'll be doing on various articles published in Harvard Business Review. So, the first article that we are going to begin with is about trust. And Dr. please tell us a little bit about this article. And also, I would like to tell the audience about the rationale why we chose this article. All right. So, Rational, you're going to take on, but I'm going to tell a little bit about the main theme of this article. So, I think this is an important article from the perspective of people who are assuming role of leadership within the organizations, especially corporate sector. और जो इस आर्टिकल के 3 essential एलिमेंट्स बताए हैं ऑथर्स ने वो बताए हैं authenticity, logic, and empathy. So the authors actually have reiterated in this article and again that if you want to become really powerful leaders and type of leaders with whom people can relate themselves to or engage with, you need to build these 3 characteristics in yourself. तो वो लोग जो managerial roles से leadership roles की तरफ move कर रहे हैं, it's very important for them to read this article, and we are trying through this video to make their life easier. So if they come across this article, they can have some idea of what this article talks about. So the 3 essential elements, which the authors actually have shed light upon are authenticity, logic, and empathy. And I think personally, so I have myself been working for quite long now. I have about 26 years of professional experience. और उसके अंदर मैंने ये देखा है कि ये तीनों चीजें वाकई बहुत important हैं. It's not just from theoretical perspective, and it's not just fashionable words. कि empathy एक fashionable word है, तो सब use करना शुरू हो गए. Innovation एक fashionable word है, but I think it's really important. So अगर मैं one by one उसको थोड़ा सा quickly viewers के लिए touch upon कर दूँ, so I think it's important we start from one node of the triangle. So it should be considered as a triangle. That's what the author says. That's what they have called it. Yes, yes, trust triangle. So इसका जो title है वो भी begin with trust है इस article. So in the trust triangle, one vertex is authenticity, one vertex is empathy, and one is logic. So if we put the authenticity as the top vertex in that triangle, I think it's important because authenticity is something which actually is related to leaders who are genuine, who want genuine engagement. They are authentic leaders, right? So they have to exercise authenticity, and they are the leaders who actually are true to themselves also. So not only to their followers, but you need to first stick to yourself, and then you can have that element where you can be true to your followers. So I think if you want to really build trust with your followers, you need to exercise that authenticity. I think there's another point in it as well, which I would like to add is that there has to be very strong alignment between the words of the leaders and their actions. Absolutely. That alignment is what the followers are looking at. If there is a dissonance between those two, then of course the authenticity will not be there. बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखें ना आपके वर्ड्स और एक्शंस के दरमियान there is a disconnect or a dissonance that you have used a very appropriate I think word है कि dissonance अगर है तो फिर वो उसकी validation वो कैसे validity कैसे draw करें एज ए लीडर भी आप अपनी वैलिडेशन या वैलिडिटी को कैसे मैनिफेस्ट करेंगे और फॉलोअर्स भी आपको कैसे करेंगे सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी इंटेंशंस आपकी सेंस ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड दिस इज व्हाट द आर्टिकल टॉक्स अबाउट नाउ कमिंग टू द सेकंड वर्टेक्स व्हिच इज लॉजिक you see logic is related directly to rationality, right? So a person who is rational, realistic, he or she in fact relies on logic is something which is the uh, which is desirable in people who are pragmatic and who want to achieve something. You can't be illogical and just ask people to follow you illogically. Okay? So this is again an important thing. Again, these are things which are obvious. We know about these things. This is not something which is hidden.
These are just identifying the obvious. जैसे पीटर ड्रकर ने कहा ना, तो great people don't do great things, they identify simple and obvious things. So ये जो authors ने किया है, ये words सबको पता है कि authenticity क्या है, logic क्या है, empathy क्या है. But this is good. So I think logic is something about rationality. It's about well-reasoned explanation, and I think it is important for building trust, because if you are a logical leader, then people would be ready to follow your compelling rationale. So if you put across compelling rationale in front of them, they'll be ready. So I think that is a very important point because normally ये होता है कि जब decision making होती है, अगर आप organizations के context में बात करें तो decisions are usually concentrated at the top. Yes. In the conventional leadership. So वहाँ पे जब जो followers हैं उनको usually direct किया जाता था कि चलिए आपने करना है. They were not really made a part of that decision. So उनको वो logic clear नहीं होती थी कि ये जो भी हो रहा है ये क्यों हो रहा है. So उसमें फिर उनसे ये expect करना कि अच्छा they do their best, फिर थोड़ा सा जरा doubtful हो जाता है. Absolutely. बिल्कुल ठीक है. आपने you have identified that. And lastly, coming to empathy. Again, empathy is you are not feeling for someone else. How can you be lead? You see, you cannot disconnect or you cannot divorce emotions from your leadership style. Because अगर आप इसको divorce कर देते हैं और आप emotions को separate रखते हैं, you can't become mechanical. True. It's not machines interacting with each other. They're human beings. Yes. So even humanoids have now emotion. जो robots बन रहे हैं उनके अंदर भी emotions का element डाला जा रहा है through data feed करके. So if you are not feeling for others, if you don't feel from the perspective of the follower, you don't step into shoes of others. वो पीछे कहा जाता है ना, the shoes must be pinching you where it is pinching the follower. तो फिर ही आपके अंदर एक authenticity. So probably there would be again that disconnect from the reality if the leader does not empathize with the followers. True. So thank you, Dr. Saab. इसमें मेरा एक और सवाल है आपसे नहीं है कि you have been in a lot of leadership positions, you still are. So आपके ख्याल में ये जो तीनों points हैं, authenticity, logic and empathy, इसमें से किसी भी leader के लिए सबसे मुश्किल कौन सा हो सकता है, सबसे tricky कौन सा हो सकता है maintain करना? If you ask me personally, I think empathy can be really tricky. उसकी वजह यह है कि people often misunderstand the domains where sympathy and empathy should be treated distinctly, right? So if you are standing beside your employee in a moment of grief or something, where he or she is not only grief in terms of losing some loved one or anything else, but there can be moments of grief, otherwise also true. And you think that you are standing beside him or her and he or she is going to be very happy. Yes, he or she is going to feel the support. But empathy is actually sharing the happiness and sadness and ups and downs and, planes and busts and booms, everything. So it becomes really tricky because people interaction, authenticity can be, there can be, you are leading by example, your action and deeds, you make sure that what you say, you practice. It's also very difficult. I'm not saying all three things are difficult. That is why, they have been identified through research. True. It's not something. Authenticity के साथ एक बहुत बड़ा factor आता है वो accountability का. Accountability. So वो भी एक और तरह से मुश्किल. वो एक और मुश्किल डोमेन है ऑथेंटिसिटी के साथ अकाउंटेबिलिटी. लेकिन एम्पैथी में क्योंकि आपने रिलेट करना है, आपने उसकी फीलिंग्स को समझना है, और ह्यूमन बींग्स इतनी वाइड एरे ऑफ फीलिंग्स के साथ आते हैं कि उनको समझना लीडर के लिए पूरा एक बहुत ज्यादा है. तो वो इतना इमोशंस के आपसे ना हो सकते. आई थिंक maybe people can disagree with me, but this is my So it is always open to discussion. Yeah. So one last point डॉक्टर साहब ये है कि किस तरह से ये जो लीडरशिप का स्टाइल इन्होंने जो प्रपोज किया है, इसको ट्रस्ट ट्रायंगल लीडरशिप कहते हैं, तो ये किस तरह से आपके ख्याल में जो कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लीडरशिप है उससे किन किन डायमेंशंस पे जस्ट 2 or 3 अगर आप हाईलाइट कर सकें? आई थिंक सबसे बड़ी जो डायमेंशन डिफरेंट है वो रिलेशनशिप, बिल्डिंग रिलेशनशिप. अगेन दैट इज बिकॉज आपकी ऑथेंटिसिटी, आपकी लॉजिक, आपकी एम्पैथी, ये रिलेशनशिप बिल्ड.
अगर आप फॉलोअर्स के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं तो आपकी एक एम्पथी का एक इफेक्ट तो आता ही है, लेकिन ट्रेडिशनल लीडरशिप में इट वाज मोर ऑफ अ हायरार्किकल लेयर्ड काइंड ऑफ यू नो एक वो अप्रोच थी, जिसमें ठीक है आपको को फॉलोअर ने थ्रू वो पावर स्ट्रक्चर्स जो डिस्ट्रीब्यूटेड है या डिफ्यूज्ड है विद इन द लेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसके तहत उसने उसको आपने ओबे भी उसने आपको करना है, उसने आपको किसी हद तक चैलेंज करना है, उसके बाद रुक जाना है। लेकिन इसके अंदर क्योंकि वो रिलेशनशिप करता है तो यू ऑल्सो आर ओपन टू सजेशन एंड फ्लेक्सिबल। कैन वी पुट इट इन दिस वे कि वहां पे कंप्लाइंस थी और यहाँ पे इट इज मोर ऑफ एन इंस्पिरेशन। इट्स मोर ऑफ एन इंस्पिरेशन, यस यू आर राइट। ऑथेंटिसिटी इंस्पिरेशन करेगी, लॉजिक इंस्पिरेशन की, जब आप रियलिस्टिक रैशनल कंपेलिंग रैशनल रखेंगे तो ये दूसरा आई थिंक एक और डायमेंशन फर्क जो ऑथर्स भी बताते हैं और आई थिंक एक्सपीरियंस भी बताता है वो है डिसीजन मेकिंग, राइट। सो उसमें जिस तरह इसमें रिलेशनशिप है उसमें डिसीजन मेकिंग ट्रेडिशनल लीडरशिप में आपको पता है मोर टॉप डाउन और मोर वही जैसे डायरेक्टिव है, इसमें मोर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल पार्टिसिपेटिव, क्योंकि आपने ट्रांसफॉर्म करना है तो आप पार्टिसिपेशन। तो आई थिंक अगर ओवरऑल समरी की जाए तो इट्स अ ब्रिलियंट आर्टिकल। I think people should read it. Those who are assuming positions of leadership, those who aspire to become really aspiring, inspirational leaders. And I think so. आप भी बताइए कि आपके ख्याल में from an organizational psychology perspective, because it's your area, आपके ख्याल में how much weight which element carries? I'm not saying quantifiably के पॉइंट टू लॉजिक का है या पॉइंट थ्री थ्री सारों के, व्हाट इज योर ओपिनियन? मेरा ख्याल ये है कि चूंकि अगेन जैसे आपने जो पॉइंट रेज किया था, बिकॉज इट इज लीडरशिप इज ऑल अबाउट द इंटरेक्शन बिटवीन द फॉलोअर्स एंड द लीडर्स, काइंड ऑफ कनेक्शन दैट दे क्रिएट। सो मेरा ख्याल ये है कि इसके अंदर एम्पैथी अगेन is a very difficult task to do, but once we are able to do that, because वो चीज मैंने अपने करियर में भी देखी, ऑल्दो कि वहाँ पे ज्यादा इट वाज जैसे यूनिवर्सिटी की एनवायरनमेंट है तो उसमें स्टूडेंट्स के साथ था, बट आई रियली सॉ आई रियली एक्सपीरियंस द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ एम्पैथी। सो मेरा ख्याल है कि वो वाकई आई वुड एग्री विद दैट कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो बट अगेन इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन प्रोबेबली कि Yes. जैसे वो आर्टिकल में उन्होंने कहा है कि दीज आर द लीडरशिप वॉबलर्स, जैसे गाड़ी वॉबल करती है अगर टायर की अलाइनमेंट या बैलेंसिंग खराब, तो ये भी इंग्लिश में तो वो लीडरशिप बबल करने शुरू होता है। यू नीड टू मेंटेन अ गुड बैलेंस ऑफ थ्री एलिमेंट्स। Exactly. So, sir, thank you very much. Again, it is a very interesting article. Of course, discussion can go on for a long time, but we'll come back with another article which is also related with leadership. But as we know that leadership comes with a lot of anxiety because it's a huge responsibility. So, हमारा जो next article है, inshallah, that would be about leading through the times of anxiety. So, thank you very much for being with us, and we'll see you soon. Stay tuned.